So good morning everyone, and we'll start with what? Body fluids and circulation. Okay. So in this particular chapter, body fluids and circulation, we'll talk about the basics of the circulatory system. We'll talk about the heart, the arteries, veins, etc. Okay. And if you remember, Kingdom Animalia, I have introduced to you already what is an open circulatory system and what is a closed circulatory system. So, are these terms new or are you familiar with the terms? That the circulatory systems can be of two types, that is open and closed. And you already know the use of a circulatory system. So, let us get to the point. Okay, Aditi, what is a closed circulatory system? Blood vessels are present in blood directly contact with the Can you be a little bit louder, beta? कैसे बोल सकते हैं आप? blood vessels are present. Blood directly contact with the Okay, ठीक. So just to recap it fast, revise it very fast. You already know that there is a pumping organ. The pumping organ which will undergo contractions and relaxations, so that the circulatory fluid, the fluid, will move throughout the body. And that pumping organ in the closed system is called as the heart. And the heart pumps the circulatory fluid into blood vessels which are called as arteries. And the arteries break up into blood vessels which are called as arterioles. The arterioles further break up and result in the formation of the thinnest type of blood vessels in your body. The thinnest, the smallest type of blood vessels in your body, which are called as capillaries. So what do the arteries break up to form, Uchlo? Capillaries. Now the capillaries will unite and they will result in the formation of venules. And the venules will join and they will result in the formation of veins which will go back to the heart. So from this, can I say that the correct definition of an artery is a blood vessel that carries the blood away from the heart, and vein is a blood vessel that carries the blood towards the heart. So what is an artery? It's a blood vessel that carries the blood away from the heart, and vein is a blood vessel that carries the blood towards the heart. Usually हम लोग बचपन में बोलते हैं arteries carries oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood. तो इसको definition में लेते हैं, ऐसा नहीं लेना है. हम definition में क्या लेंगे? Artery is a blood vessel that carries the blood away from the heart. Vein is the blood vessel that carries the blood towards the heart. You get my point? Now, when the arterioles break up to form capillaries, it shows the presence of the pre-capillary sphincters. And these pre-capillary sphincters, they regulate the amount of blood that is flowing into the organ. समझा मैंने क्या बोला? Sphincter is like a ring muscle. It's like a ring muscle. If it contracts, it will close the opening. If it relaxes, it will open the opening. So if you want more blood to enter into the organ, then the precapillary sphincter
will be contracted or will it be relaxed? Relax. Who will do it? The brain and the hormones. If you want less amount of blood to enter into an organ, the precapillary sphincters will. So can I say in a closed circulatory system, the amount of blood entering into a particular organ is highly regulated by the brain and the hormones. Did you understand it? Yes or no, children? Now, so these are the cells. Now my question is the blood coming in direct contact with the cells? No. So the cells are saying कि हमको खाना पीना चाहिए. We want water, we want glucose, we want amino acids. वो तो सब blood के अंदर है और blood इस capillary के बाहर नहीं आ रहा. So all the nutrients from the capillaries will flow out like water, glucose, sodium, amino acids, etc. As a result of which the cells will come in contact with a fluid. Cells will come in contact with a liquid. This liquid, is it blood or is it a liquid which has been formed from the blood? Blood. It is having more number of nutrients and very less number of wastes. The cross is the waste. Okay? This fluid is called as interstitial fluid. It occupies the tissue spaces. This fluid is called as the interstitial fluid. It occupies the tissue spaces, spaces between the cells. And through this fluid, the cells will get the nutrients. Okay? Now the cells will be happy. And after using the nutrients, don't you think the cells will also put their waste into the fluid? Yes or no? So as the fluid is moving away from the cells, it is having less number of and more number of waste. So we say that now the composition has changed and I'll call this as the lymph. What is my point? So interstitial fluid has having more number of less number of whereas the lymphatic fluid is having more number of and less amount of. You got the idea? So consider yourself to be a cell standing under the shower, and the water coming out of the shower is the interstitial fluid. Is it dirty water or clean water? Clean water. And you are the cell, it falls on you. You use the water, now the water is going down. Is it clean or dirty now? Dirty. What is that? Lymph. It is having more amount of less amount of. Nutrients. So can I say that now the lymph, will it go back into the same shower? No. Or it needs to be drained? Drain. So you go your washroom has a separate drainage system. Yes. There is a delivery system and there is a separate. Drainage system. I am talking right now about the Drainage system. delivery. Heart, arteries, capillaries, veins, they are responsible for delivering the nutrients towards your body ka cells. As a result of which there is formation of a fluid which is called as the lymphatic fluid. अभी lymphatic fluid को यहीं रखना है क्या बच्चों? तो उसको उसी कैपिलरी में वापस डालेंगे? नहीं. So as a result of which you will have a separate group of capillaries. Did you see the separate group of capillaries I am showing in red color, bachcho? This is called the lymphatic capillaries. What do you call the capillaries? Lymphatic capillaries. So what will the lymphatic capillaries do?
they'll collect the lymph. Right, Mucho? And these lymphatic capillaries will unite to form lymphatic vessels. And these lymphatic vessels, they will unite to form the lymphatic ducts. And these lymphatic ducts will drain back the lymph back into the vein. So do you see the system which is shown on the left hand side, Uchilo? Will you call it as a delivery system or a drainage system? Drainage system. What is it doing? It is draining. Draining म्हणजे निकालना. किसको निकाल रहा है? Lymphatic fluid. कहाँ से? From the organs. That is the cells, na? Cells come together from tissues, tissues come together from organs. From the organ, it is taking it back into the veins. Okay? So in school, they put an emphasis on heart, arteries, capillaries and veins. ये सब सिखाते हैं ना? तो वो लोग जब ये सिखाते हैं तीन चीज को, heart, arteries, capillaries and veins, वो लोग किसके बारे में आइडिया दे रहे हैं? डिलीवरी सिस्टम के बारे में. और लिम्फ के बारे में एक ही लाइन रहता है, इट इज अ येलो कलर्ड फ्लूइड वगैरह. आप समझो उसका रिलेशन, समझा? लिम्फ और ब्लड का रिलेशन समझा? ब्लड लिम्फ में से फॉर्म होता है कि लिम्फ ब्लड में ड्रेन होता है? लिम्फ ब्लड में ड्रेन होता है और लिम्फ ब्लड में से ही फॉर्म होता है. आया बात समझ में भी बच्चों? यस पसंद ना? So now the lymph will be taken in by the capillaries, put it to the veins, ducts, and go back to the veins. One more thing is going to happen over here. On the lymphatic ducts and the lymphatic vessels, we see the presence of, what do we see the presence of? Lymph nodes. These are small bean-shaped, kidney-shaped parts which filter the lymph. You remember I taught you reticular connective tissue? We had got three: areolar, adipose and reticular. हम लोगों ने रेटिकुलर को पढ़ा नहीं था, मैंने बोला था ये नहीं है आपको. तो जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ lymphatic nodes. It has got mesh जाला जैसा, which will help to drain, filter the lymph. फिर ये lymphatic nodes के अंदर white blood cells होते हैं जो बैक्टीरिया और जर्म्स को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं और खा लेते हैं उसको. इसलिए अगर आपके पेशेंट आया आपके पास और उसका अगर lymphatic nodes का swelling है, तो इसका मतलब ये इस बात का इंडिकेशन है कि उसको कुछ ना कुछ तो इन्फेक्शन जरूर है. व्हाट माय पॉइंट? काफी बार कैंसरस सिचुएशंस में भी lymphatic nodes का क्या आता है? स्वेलिंग आता है. तो कैंसरस सेल्स बॉडी के एक पार्ट में से दूसरे पार्ट की तरफ माइग्रेट हो सकते हैं और वो माइग्रेट होने के लिए ये लिम्फेटिक सिस्टम का रूट यूज करते हैं. हमारी भाषा समझते हैं ना? और जब वो रूट यूज कर रहे हैं तो लिम्फेटिक नोड उसको ट्रैप करने की कोशिश में अपना साइज बढ़ा. आया बात समझ में? So can I say the lymphatic nodes are like police chowkis which try to scan for pathogens, disease causing agents. You got my point? So if you ask me, okay sir, what are the different parts of the human circulatory system which you're going to teach us? I'll say that the human circulatory system will be divided into two parts. One will be the blood vascular system. Vascular
Xylem and phloem are vascular tissues. Xylem for the water provision, phloem for food. So vascular मतलब खाना पीना देने वाला. तो देखो blood खाना पीना देने वाला system, delivery, divided into the circulatory fluid, that is the pumping organ, that is the heart, and the blood vessels, which are the arteries, capillaries, and the veins. समझ सर्वांना इथपर्यंत? What is the other system, बच्चों? It will be the lymphatic system. And this lymphatic system will be made up of the liquid which is called as lymph. Then we have got lymphatic capillaries. Then we have got the lymphatic vessels and the lymphatic ducts. And we see the presence of the lymphatic nodes. So this is an overview of the human, what बच्चों लोग, circulatory system. समझ लो सर्वन्ना? Lucky everybody. ठीक? So when we say human circulatory system, what should come in your mind? सबसे पहले open की close? Close. So is the blood going to leak out of the blood vessels? No. And what if it leaks out? You will say it is hemorrhage. क्या word use करेंगे? Hemorrhage. So you have got brain hemorrhage. So why do you say brain hemorrhage? Because you have got the brain. Inside the brain there are thousands of smaller blood vessels which are carrying what? Blood. But does the blood and your neuron come in direct contact? No. Suddenly there is high blood pressure. The capillaries break and the blood comes in contact with neurons. The neurons die, you fall down. So should your blood come in direct contact with your cells in the brain? No. If the blood leaks out, what is the word you will use? Internal bleeding, hemorrhage. Someone learn? So just imagine you are the millions of cells that are there in the human body and the blood is flowing in between you. How is it flowing? Through pipelines. So you as a cell are looking at the pipeline which is carrying the, and from that comes out a liquid and you bath in that. What is that? Interstitial fluid. Then the Gandu fluid goes out, that is the lymphatic. If the blood vessels ruptures, all the blood will come out. So how is the system? Open or close? Close. Meaning समजा मेरा शब्द नाही अजून ते स्कूल सारखंच अजून अंडरस्टँडिंग आहे आपलं नाही ना समजलं. So I'll divide the human circulatory system into how many parts, bacha? 2 parts. What are the 2 parts? And lymphatic system. Which is the drainage system? ये शब्द माझे आहेत हा. You will not see Guyton saying that it's a drainage system. This is just to make you understand. Who is the drainage system? And who is the delivery system? Very good. Any problem in your life, bachlo? So, yes, problem hai? What's the problem? Tell me. Not getting answer to your blue ticks? Huh? You need to change your DP. Okay? Photography is not appealing. So, what do you want to study first in all this? Tell me. आपको क्या पढ़ना है? आप बताइए. सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. चलो पढ़ा दो ना. ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. अच्छा उसमें सबसे पहले क्या पढ़ना बताइए? हार्ट पढ़ना है. हार्ट पढ़ना है सबसे पहले. हाँ. पहले ब्लड पढ़ना पड़ेगा. पूछो क्यों? नाम देखो. बॉडी फ्लूइड. बॉडी फ्लूइड. कौन आहे बॉडी फ्लूइड? नाही समजलं. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये कोण आहे? हार्ट आणि ब्लड. व्हॉट अबाउट बॉडी?
So that is how you study in medicine also. First thing you study is blood. Easy peasy, lemon squeezy. Yeah. Now when I talk about the blood, what कैसा कैसा बात किया जाएगा ब्लड के बारे में? कौन है ये ब्लड? वो तो सब बात करेंगे. लेकिन उसके पहले ध्यान में रखना, आपके बॉडी को मैं 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करूँ. कितने कंपार्टमेंट्स में? 2 कंपार्टमेंट्स. सुन रहे हो मेरी बात? One compartment. Who is this? नीट का मान सोच लो. इसके आगे तो 7 और एक 0 आना चाहिए ना. कि आगे 007 आना चाहिए. क्या आना चाहिए? देखो डिसाइड करो. लेफ्ट में 7, राइट में एक और 0. देखो कॉन्फिडेंस. हाँ, दिवाली की मिठाई जो है पूरा दिमाग तक गई उसके. तो ये कौन है बच्चों? सेल है. हाँ? और इस सेल के अंदर का जो भी फ्लूइड है उसको बोलते हैं आईसीएफ. क्या होता है उसको? आईसीएफ. अच्छा रहेगा. what is the full form of ICF? Intracellular fluid. What is the word? Intracellular fluid. Intra. आत्म. सेलचा. इंट्रासेलुलर. सेलचा आत्मद्रव्य. और जो भी बाहर कराएगा it will be called ECF. That will be called as extracellular fluid. So tell me, who separates the ICF from the ECF? Cell wall. Human being में कब से cell wall आ गया? Cell membrane. Who separates the ICF from the ECF? Cell membrane. Okay. The principal cation in the ICF is K plus. Who is it? K plus. And the principal cation in the ECF is N plus. Okay? That is. And in the ECF, the main ECF, I'm talking about Na plus किस में ज़्यादा है? Is the blood. समझ लो. So if I ask you, what is the blood? What is the answer you give me? Is an intra or extracellular fluid? Extracellular fluid. बोला it is the mother of all extracellular fluid. क्या बोला सर? Every other extracellular fluid is born from the blood. नहीं समझ लो. अब कौन है? Synovial fluid. जो joints के बीच में. आपकी पैदाइश किस में से हुई? कुछ मेम्ब्रेन्स है. Synovial membranes. बराबर है. आप कौन है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है. कहाँ पे हूँ? ब्रेन. आपकी पैदाइश कहाँ से हुई? ब्लड से. आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड है. आपकी पैदाइश कहाँ से हुई? ब्लड से. आप लिम्फेटिक फ्लूइड है. आपकी अल्टीमेटली पैदाइश कहाँ से हुई थी? So who is the principal extracellular fluid? And majority of the fluids come from the blood. Got my point? So give me other examples of extracellular fluid. Lymph. Interstitial fluid. Then cerebrospinal fluid. Synovial fluid. Aqueous humor. बड़े से नाम है. लेकिन मेन कौन है? Blood. I hope you got my point. So what are the two compartments that divided your body into? Intracellular fluid and extracellular fluid. And blood is a extracellular fluid. Blood is a fluid connective tissue. What is blood? Fluid connective tissue. You already know that. Connective tissue, binding, support, specialize, loose, dense, specialize. ये भी classification था. Loose, dense and specialize. Specialize में you add bones, cartilage. So blood is a specialized fluid connective tissue.
So the origin of blood is ectodermal. बराबर की नहीं? Because connective tissues are ectodermal in origin. हाँ? Mesodermal. पक्का? कुछ लोग जानते हैं. So what is the origin of the blood picture? It is mesodermal in origin. Okay, is there with me everybody? Circulatory properties. I say blood is not a true connective tissue. It's not a true connective tissue. मतलब मैं उसको सच्चा कनेक्टिव टिश्यू नहीं मानता. पूछो क्यों? आप बताइए क्या होगा रीजन? Yes, one of the reason is the blood does not show the presence of any fibers. What is the other reason? You know, the cells of the connective tissue have the ability to undergo cell division, but the cells of the blood, the mature cells of the blood, they cannot divide. The cells do not show division. So these reasons and many more, couple of them more, make the blood a false connective tissue. क्या कहेंगे उसको? False connective tissue. False connective tissue. Have you got my point? Now, let us talk about some of the physical properties of blood. What's the color of human blood? Red. Oxygenated blood is bright red, and deoxygenated blood is dark red, dull red. Okay? याद रहेगा? What is bright? When we say deoxygenated, does it mean that the blood does not have oxygen at all? The answer is no. Deoxygenated blood means that it has more number of carbon dioxide and less amount of oxygen. Got my point? Now, then Buchlo, what is the pH of the human blood? It is slightly alkaline with a pH of about 7.4. Okay. Then, what's the quantity of the human blood? About 4 to 5 liters in an adult female, and about 5 to 6 liters in an adult male. Okay? So, who has got more amount of blood? Male. Who has got a bigger heart? Male. Who has got a bigger brain? Male. So, बड़े दिल वाला कौन है? कौन है बड़े दिल वाला? Male. बड़ा दिमाग वाला कौन है? Male. आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसका रीजन क्या बच्चों? अच्छा वो बात अलग है कि अपना टॉपर लिस्ट में ज्यादा कौन आता है पूछेगा तो फीमेल नाम आएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए डिस्कशन के लिए, बायोलॉजिकल डिस्कशन के लिए बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है? और गौरव अपना सीवी में चढ़ा देगा बड़ा दिल वाला, बड़ा दिमाग वाला. जो ये है बच्चों, क्या रीजन है इसका? कि मेल का बॉडी स्ट्रक्चर का डायमेंशंस थोड़ा ज्यादा रहता है. तो सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मेल्स हैव मोर अमाउंट ऑफ व्हाट? टेस्टोस्टेरोन. व्हाट माय पॉइंट? एंड ब्लड बनाने के लिए एक हार्मोन लगता है. उस हार्मोन का नाम है रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर. क्या नाम है उसका? ये कौन है बच्चों? किडनी है. और किडनी क्या रिलीज करती है? रीनल एरिथ्रोपोइटिक factor. And this renal erythropoietic factor helps in
blood formation, which is called as hemopoiesis. And the sex hormone, which is called as testosterone, can stimulate the kidneys for the production of, which will help in the formation of blood. So who will have more amount of testosterone? So who will have more amount of renal erythropoietic factor? So who will have more blood formation? So the quantity of blood in males is going to be larger than in females, and at the same time females also lose a small amount of their blood in the form of menses, the menstrual flow. What my point? So the quantity of blood is slightly larger in the case of an adult male as compared to a female. Did you get my point, everybody? Yes or no? Okay. It is viscous. Viscous matlab gaadha, and it is salty to taste. These all will come under the physical properties of blood. You got my point? So if you want to study the blood now, you will have to remove the blood from one of your superficial veins. It is called vein puncture. Why don't we do an arterial puncture, Vacho? Number one, arteries are more deeply seated. And even if you remove blood from a superficial artery, the blood is under high pressure. Got my point? So what do? We do a vein puncture. We draw out the blood. And we will centrifuge it. कैसा करेंगे? कैसे centrifuge करेंगे? ऐसा. So you'll have the liquid part of the blood, which is the matrix of the blood. You know, connective tissue has a matrix, and this matrix of the blood is called as the plasma. So who represents the matrix of the blood, Uchilo? Plasma. And the other things are called as the solid particles or the formed elements or the blood cells. Got my point? And at the bottom of the tube, you will have red blood cells. And above that, you have a buff coat of the white blood cells and the platelets. Are you getting my point, Chilo? So the human blood shows the presence of the liquid part, which is called plasma, and the solid part, which is called as the formed elements. These form elements include the cells, that is the red blood cells or the erythrocytes, that is RBC. The white blood cells, which are called as the leukocytes, that is the WBC, and the thrombocytes, which are called as the blood platelets. Okay, 55% of your blood is plasma, and 45% of your blood is formed elements. Are we clear, Bachalo, everybody? Yes. Ayana? So blood is which type of tissue, Bachalo? It's a fluid connective tissue. And what did we call it? True or a false fluid connective tissue? False. Because of the absence of fiber and the inability of the cells to undergo cell division. The color of blood is
Bright red where it is oxygenated and it is deoxygenated. बराबर है? Then in order to study the blood, where do you draw the blood out from, Muchalo? From the veins. So why do we do a veiny puncture? Why don't we do an arterial puncture? I told you the reason. लेने के बाद उससे सेंट्रीफ्यूज किया तो ब्लड के कितने कंपोनेंट्स बने? दो. 55% of it is plasma and 45% of it is okay. Which part of the blood is called as the matrix of the blood? Plasma. Okay. So now what we want to study is, the first thing we want to study is the human plasma. ठीक है. Any questions up to here बच्चों? सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कि what's a closed circulatory system, what are the divisions of the human circulatory system. Then we have started with the blood. The next thing we want to continue with is the plasma. Okay. कोई डाउट्स है? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? Take down it quickly बच्चों. Then we'll start with the plasma for further details. Plasma. Well, whatever. It is the matrix of the blood. It is the fluid part of the blood. Okay. So the plasma represents the matrix. Kids, what is the color of the plasma? Huh? Colorless. Yellowish. दो opinions है. Color क्या करूँ? Colorless लूँ कि yellowish लूँ? आप बताइए. मेरे को नहीं पता है. हाँ? Majority wins. Yellowish? ठीक है. It is pale yellow in color, which is also called straw colored. Straw म्हणजे अपनी फ्रूटी की straw नव्हे. घास सूखने के बाद गवत और what do you say? Penda. That's the right word? No? Then whatever, you understood now, but what I meant to say? Okay, that color. Pale yellow in color. What gives it a pale yellow color, bachcho? A little bit extra information. It is because of urobilinogen, which is a bile pigment. So what gives the pale yellow color to the plasma, bachcho? Urobilinogen. Right, bachcho? And majority of your plasma is what? Water. Around 91 to 92% of the plasma is water. Rest 7 to 8% of your plasma is protein. And 3% of your plasma is other substances, which includes electrolytes, gases, wastes, regulatory substances, other organic molecules. ये 3% में क्या क्या बच्चों? It will include what? Electrolytes. What are the electrolytes? Sodium, potassium, ये ना वो. Then gases, regulatory substances, मतलब hormones वगैरह है ना. Then I also included the waste and some other organic molecules. Huh? Right now we are going to focus on what bachalo? Proteins. And the first one, इसके ऊपर MCQ आया था, प्रोटीन और उसके functions के ऊपर based MCQ. 6 to 8 दिया. 6 to 8 दिया है. Okay, this is a value from Totter Book of Medicine. Okay. According to NCRT, we'll go with the value of 6 to 8%. Okay. Now, so ये proteins जो है, वो कौन से proteins है? The most abundant plasma protein is, was it? Albumin.
Albumin. Albumin. क्या बोलेगा? So which is the most abundant plasma protein? Albumin. The percentage is not there for you. It is around 54% of the proteins. सारे proteins में maximum कितना है ये? 54%. So इतना क्यों है ये? Because its main function is it gives osmotic potential to the blood. क्या देता है बच्चों? Osmotic potential. Okay, it's also called oncotic pressure. But inside is using the word what? Osmotic potential. नहीं मालूंगा ना ये आइडिया बच्चों? हाँ? बता रहा हूँ। जरा ध्यान देंगे ना मेरी बात की तरफ। थोड़ा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स होने के बाद ना ऑस्मोटिक पोटेंशियल और अच्छे से आपको आएगा। अभी थोड़ा जितना आपकी इज्जत बचाने के लिए चाहिए उतना बताता हूँ। ये कौन है बच्चों? लाल रक्त कोशिका। That is your RBC. आजू बाजू में कौन है? ब्लड। ब्लड का मेजर लिक्विड पार्ट कौन है? बरोबर है की नाही? रेड ब्लड सेल मध्ये प्रोटीन्स आहेत ना? हो आहेत. As a result of which it will have osmotic potential, and we'll say that right now the red blood cell is what bachlo? Hypertonic. It is concentrated. It is having what? Proteins. Surrounding blood plasma, take the condition that it is what bachlo? Hypotonic. Take a situation जहां पे प्लाज्मा के अंदर कोई प्रोटीन्स नहीं है, तो क्या बन जाएगा? डाइल्यूट. प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वाइज क्या बन जाएगा? डाइल्यूट. और अंदर का आरबीसी क्या बन जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड. एंड यू नो ऑस्मोसिस, यू नो ऑस्मोसिस सुना? उसका रूल है वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपो टू हाइपर. इतना भी नहीं मालूम? नहीं, कभी नहीं सुना. Water moves from its higher concentration to its lower concentration. Got my point? Yes, sir. So water is going from what? Hypo to hyper. So gradually what will happen to the RBC? धीरे धीरे RBC का क्या होगा? साइज कम होगा कि बढ़ते जाएगा? So what will happen to the RBC? It will, and ultimately the RBC will. Will you remain alive then? No. So consider a situation जहां पे मैंने प्लाज्मा में से सारे प्रोटीन्स को निकाल दिया, तो आपका प्लाज्मा का सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा. सोल्यूट्स कम हो जाएंगे. आपका कैसे पहले सुन और फिर उसके बाद जवाब देना. सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो गया? कम. सोल्यूट सॉल्वेंट तो मालूम है ना प्रतीक्षा? क्या इसे देख रहे हो? सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? व्हाट इज सॉल्वेंट? पानी और सॉल्ट्स में सॉल्वेंट कौन है? रुको, दोनों दुबे जी को बताता हूं. सोल्यूट सॉल्वेंट नहीं माहिती बाबा. वाटर विल बी द सॉल्वेंट, सॉल्ट विल बी द सोल्यूट. तो मैंने बोला सारे सोल्यूट्स को मैंने निकाल दिया, मतलब सारे प्रोटीन्स को क्या किया मैंने? निकाल दिया. तो बचेगा क्या? सिर्फ लिक्विड पार्ट. तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया कि कम हो गया? सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन. तो वाटर भी घुस रहा है किसके अंदर? आरबीसीज के अंदर. जिसके वजह से क्या होता है? RBCs will start swelling and they will burst. So don't you think it's a dangerous situation now? Yes. So don't fear. You have an organ which is called as the liver. Liver will produce a protein which is called as albumin. And this albumin will be put into the which part bachlo? Blood. Blood का which part? Plasma. As a result of which, because of albumin, the solute concentration of the plasma will increase or decrease? Increase. So it will get a potential which is called as osmotic potential. Now the red blood cell also has got proteins, but even the plasma has got equal amount of proteins. So now will the red blood cell shrink or burst? No. Got my point?
अगर यही सारे ब्लैक 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 एल्ब्यूमिन मैंने निकाल दिया समझो, तो क्या होगा प्रॉब्लम? यहां से पानी, बाहर से पानी अंदर घुस के आरबीसी को क्या कर देगा? Got the role of albumin? So what does albumin do? It gives osmotic potential to the blood. How will you understand it? If you remove all the proteins like albumin, the plasma will have more amount of as compared to your. So what will start moving into your, and that can burst it. What my point? So now you want even the plasma to have some solute concentration, and that will be created by the production of a protein called, and the albumin will increase the osmotic potential of your blood. So what's the function of albumin? To maintain the osmotic potential of the blood, as well as it also helps in transport of hormones. What is the second function it helps in? Transport of hormones. क्या है दूसरा function करता है वो? Transport of hormones. And how much percent I said? It is about 54%. Then you have, ये तो serum albumin है. Then you have got another protein which is called globulin. क्या होता है इसको? Globulin. Okay. Globulins include immunoglobulins. Okay. इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा. तो ये जो टाइप है, कौन सी वाली टाइप? गैमा. इट्स अ डिफेंस प्रोटीन which is commonly called as antibody. क्या होता है उसको? Antibody. It helps to fight the infections. So inside your blood, second type of protein is what Bachilo I mentioned? Globulin. Globulin is a type of protein that will give defense to the body. ग्लोबुलिन में एक टाइप है, क्या नाम है उसका? इम्यूनोग्लोबुलिन. इम्यूनोग्लोबुलिन में एक टाइप है जिसका नाम है गैमा इम्यूनोग्लोबुलिन. वो गैमा इम्यूनोग्लोबुलिन क्या देता है? डिफेंस. आया समझ में सबको बात? So who is a defense protein? Yeah, according to NCERT, globulins, that is immunoglobulins. Right kids, yes or no? Yes. And majority of these proteins are produced by your liver. Then there is heparin. That's ये नहीं पता आप लोग को, heparin नहीं पता. पता है? राइट पता है heparin? कौन है heparin? क्या काम है उसका? हाँ, तो उसके लिए वर्ड क्या है? It is inflammatory ना? Anti-inflammatory ना? Anti? हाँ, good. It is anti-coagulant. Anti वो जो है inflammatory response, वो क्या वर्ड था? वो कौन थी प्रोटीन? वो हिस्टामिन थी. बराबर है? Then you have got clotting factors. Like for example, who? Fibrinogen. What is fibrinogen? Fibrinogen is a clotting factor. What's fibrinogen? It's a what's a clotting factor? So if you get a cut and blood starts flowing out, do you want the blood to flow out or you want to clot? Clot. So at that time उस रीजन का हेपारिन को एक्टिवेट करना पड़ेगा कि इनएक्टिवेट करना पड़ेगा? और फाइब्रिनोजन को तो फाइब्रिनोजन क्या करेगा? ब्लड को क्लॉट कर देगा और वो टाइम तक हेपारिन क्या रहेगा? इनएक्टिवेट रहेगा. सो धीरे धीरे ब्लड क्या होता है? वहां पे सॉलिडिफाई हो जाता है. आया बात समझ में? सो हु इज अ क्लॉटिंग फैक्टर? So what was the PYQ? The PYQ was the name of these proteins and the related function
in match the column type of question. कैसा क्वेश्चन था? मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन. ओके, तो अगर उल्टा सुल्टा देंगे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हेपारिन, फिब्रिनोजन, ऊपर नीचे फंक्शंस है, तो फिब्रिनोजन का फंक्शन क्या होगा? एल्ब्यूमिन का, हेपारिन का, ग्लोबुलिन का डिफरेंस. Did my class follow up to here? Yes. Properly, everybody? Ayana? Now, remember one more thing. You should know the meaning of the word serum. What's the term? Serum. Okay? For that, first of all, take the blood. क्या लिया हम लोगों ने? ब्लड. ब्लड में से सेल्स निकाल दिया. अगर आप ब्लड में से सेल्स निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा बच्चों? प्लाज्मा. ओके, अब इस प्लाज्मा में से वे रिमूव द क्लॉटिंग फैक्टर्स. What is the clotting factor? So now will the plasma clot or not clot? Because you have removed it. Minus दिखाया ना मैंने. As a result of which now you'll have a liquid which is called as serum. Okay. So what is the serum, bachalo? It is plasma minus the clotting factors. Bachalo, what is the serum? It is the plasma minus the clotting factors. Understood what is serum? क्या है सीरम? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स. यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा जो अपने को 12th में हेल्थ एंड डिजीज में काम आए. हाँ, देख, ये कौन है? हॉर्स. क्या है? हॉर्स. समझा ना मेरी बात? हैप्पी हॉर्स. उसके अंदर मैंने थोड़ा सा स्नेक वेनम डाल दी. क्या डाला? स्नेक वेनम. स्नेक विश. चलो वो नहीं डाला तो कुछ और डाल सकते हो. कुछ लोगों को बुरा लग गया. समझो एक बैक्टीरिया, उसको डाल दो. उसका नाम है XYZ. So don't you think the horse का body will produce antibodies against XYZ? इसके against XYZ. So now who is this? Blood of horse. From that I removed the cells. So what did I get? Plasma. From the plasma I removed the clotting. What did I get now? Serum. Is this a normal serum or serum rich in antibodies? Serum rich in antibodies. Against? So I'll call it as anti-sera. We'll call it? Anti-sera. Anti. Antibody rich. Antibody rich. Serum. So now you get a patient and he's suffering from an infection of XYZ. उसको फीवर आ रहा है, समझो, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसको इन्फेक्शन हो गया. किसका? XYZ का. आप उसको क्या दोगे? इंजेक्शन. कहां से मिलेगा आपको इंजेक्शन? इट इज which has been obtained from a hyper immunized horse, from this horse. समझे सेरा का यूज? So serum which is rich in antibodies is used in medicine. आया ना? नहीं समझा आपको? अभी भी नहीं समझा? समझा? तो जब कोविड चल रहा था तो वो जो इंस्टीट्यूट है जिसने पहला वैक्सीन बनाया इंडिया में, जो पुणे में लोकेटेड है, क्या नाम था उसका? बोलो. बोलो. That's right, I'm hearing it. Serum Institute of India. SII.
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आप समझा क्यों वो लोग सीरम बनाते रहेंगे? फॉर ऐसा सब नहीं समझे मेरी बात आप? ठीक है। In medicine, serum also has got diagnostic importance. Diagnostic मतलब disease find करने। कि हम लोग अगर किसी पेशेंट के सीरम को स्टडी करते हैं और उसके अंदर एंटीबॉडीज मिलते हैं तो हमको पता है कि इसके अंदर ऑलरेडी वो पैथोजन है। मतलब आप जैसे आज श्रावणी लेट आए बराबर, तो उसको पता था कि अभी सब लोग बाइक पे आते हैं, तो उसने सबसे पहले बाहर दिखा बाइक है क्या, तो उसको पता चला वो सर अंदर ऑलरेडी है। तो वैसे आपने सीरम चेक किया पेशेंट का और पता चला ये तो उसके अंदर बुलेट्स है ये वायरस के अगेंस्ट, इसका मतलब वो वायरस भी प्रेजेंट। समजला? तो डॉक्टर बोलते तुमची ब्लड टेस्ट करायला लागेल, टायफॉइड आहे की नाही ते चेक करायला लागेल। मग ते टायफॉइडच्या बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्ट आपली बॉडी काय बनवणार? अँटीबॉडीज। मग तो टायफॉइडचा बॅक्टेरिया किंवा त्या अँटीबॉडीज जर तुमच्या ब्लड मध्ये सापडल्या कुठे? सीरम मध्ये, याचा अर्थ तुम्हाला इन्फेक्शन आहे। समजलं? That is why we use serum in medicine. I hope you understood. That's what serum. And I told you one more new word today. What is the new word? Antisera. What's antisera? A serum which is rich in antibodies. Yes or no, kids? So quickly tell me. I'll ask you some questions now. I hope you're sleeping today. One by one. Yes, yourself. You, Topi Master. Blood colloidal osmotic pressure is maintained by which plasma protein? Osmotic potential is maintained by which plasma protein? Plasmid? कुठं असतो? श्रद्धा नाही। एक मिनिट योगेश्वरी नाही, शर्वरी। हाँ, शर्वरी। सेम क्वेश्चन। अल्ब्यूमिन। अरे क्या सो रहा है रे बाबा? Right. So albumin is responsible for what? Maintaining the so BCOP भी बोलते हैं, blood colloidal osmotic pressure। थोड़ा excretion वगैरह में डिटेल में बताऊंगा मैं। हाँ, थोड़ा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हो जाएगा ना, थोड़ा अच्छा पड़ेगा अपने को। ठीक? Hey, you big boy. What is the process of blood formation called? Yes, Shravani, what is the process of blood formation called? Sleeping there. Pawar. Hemopoiesis. भूल गए। Ubda. What is the hormone that was responsible for hemopoiesis? Sit down, both of you. Renal erythropoietic factor. Renal erythropoietic factor is responsible for hemopoiesis. Okay, sit down. So, what will be the functions of the plasma which it will provide nutrients, it will remove the waste, gases, electrolytes, so usi ka part, it is the matrix of the blood. Okay, so human circulatory system is open type. जो बोल रहा है बोलो, क्या फर्क है? ओपन बोलो, क्लोज बोलो, हाई नहीं बोलो। Open type or closed type? Closed type. It is divided into two parts: the blood vascular system and the lymphatic system. बराबर है?
The blood vascular system consists of blood, heart, blood vessels, which are arteries, capillaries, and veins. What are the sphincters called that are present before the capillaries? Can I say they regulate the amount of blood entering into the organ? They are under the control of your and hormones. Correct, Muchalo? The lymphatic system consists of lymphatic capillaries, vessels, lymphatic ducts, and the lymphatic node. Who is the police chowki? It has which tissue? And the reticular tissue has got white blood cells there. Remember that part? Okay. What is the pH of blood roughly? Okay. What is the volume of blood in an adult male? And an adult female? And what are the two reasons you remember now? Pakka? We drawn out the blood from the and the study of blood is called hematology. The study of human blood is called hematology. Blood का study is called bloodology नहीं बोलने का. It is called hematology. Okay. Blood shows the presence of a liquid part which is called plasma, and the solid part is the formed elements. Red blood cells, white blood cells, and the platelets. Correct, kids? Then the plasma is about 55%. The formed element is about 55%. And then the plasma is made up of 92% almost water. Then 8% proteins and 3% are others. Others will include everything else. Proteins are maximum how much percent? 8%. Maximum is 8%. The NCRT value is 6 to 8. Okay. Then what are the different proteins that are there? What are the different proteins that are there with their functions? Can you tell me? Albumin, osmotic potential blood, then serum globulin, which is for defense, then heparin, anticoagulant, and fibrogen for clotting. Correct. Good. Akansha? Huh? Anushka. Virushka, Anushka. Okay. Now, Anushka, tell me, what is serum and what is anti-sera? Serum is plasma minus clotting factor, and anti-sera is serum rich in antibodies. Very good. Serum rich in antibodies. Better. Clear आज का part सबको? हाँ? See if you have any questions, बच्चों लोग. Just don't sit. 5%. And what are the three types of formed element, kids? Right? And erythrocytes are also called as? That is your red blood cells. Okay? And the normal count of RBCs is about 5.4 million per microliter of blood. Okay, see what is the value given in the NCRT text below? 5 to 5 point. पूरा read करो sentence 5 to per mm cube of blood. Okay, that is a healthy count. Okay, the amount of RBCs will be more in an adult male as compared to an adult female, and the reason you already know. Yes, kids? All of you? Shraddha, right? What is the reason? हाँ, तो वो किसको स्टिमुलेट करता है? किडनीज को क्या बनाने के लिए? एरिथ्रोपोइटिन, तो आरबीसी प्रोडक्शन भी बढ़ता है. ठीक है? The percentage of RBCs which is occupied in the total blood volume is called as the hematocrit value of blood. So what is the hematocrit value? It is the
total percentage of RBCs that is occupied in the blood volume. समझा मेरा लैंग्वेज समझा कि जो भी ब्लड वॉल्यूम है जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसमें 40 to 54% अगर आरबीसी है हेमाटोक्रिट वैल्यू है that is considered to be healthy in the case of an adult male. The value is slightly lower in the case of female. Understood what is hematocrit? The percentage of RBCs in the blood volume is called as the hematocrit value. Getting my point, everybody? Dhire will build up. Okay? Now, the process of formation of RBCs is called as erythropoiesis. Right, Michelo? The formation of total blood is called hemopoiesis. The formation of white blood cells will be called leukopoiesis. The formation of red blood cells will be called as erythropoiesis. And erythropoiesis, अभी हम लोग ब्लड फॉर्मेशन रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? यूज द बायोलॉजिकल वर्ड्स ओनली. या बच्चों, विल नॉट से आरबीसी फॉर्मेशन एंड ऑल दैट. Erythropoiesis begins from your embryonic life. You know, you have got an embryonic life that changes into a fetal life, and then you become children and adults. है ना? So, the process of erythropoiesis begins when? Embryonic life. So, when you are in embryo stage, RBC production occurs in a part of the embryo which is called as the yolk sac. So, I am talking about the site of erythropoiesis. In the case of the embryonic stages, it is the yolk sac. समझ लगा था? In the fetal stages, the process of formation is done by liver, spleen, thymus, the red bone marrow. इसमें से which are the two parts that you don't know, which are spleen and thymus? But does everybody know liver? Yes, definitely. And we also know the red bone marrow from our chapter animal tissues. Okay? So just for your understanding. Who is this बच्चा? Stomach. और है कौन है? Diaphragm. हाँ? Do you see the stomach का part? Elevated one? हाँ? थोडंसं त्याला बाजू करूया आपण. हाँ? आणि ते बघा तिकडे मागे कोण दिसतं आपल्याला? Spleen. Near that region. Okay? Spleen, as we go further in the chapter, we'll be discussing it. It's an important lymphoid organ. It helps in the formation of blood cells. Okay? Especially the white blood cells. But during your fetal life, it also produced RBCs. आता सध्या आज फ्रायडेच्या दिवशी काय प्रोड्यूस करतं स्प्लीन? WBCs. But once upon a time in fetal life, it also used to produce what? RBCs. Fetal has got multiple roles. Like it has an area which can store young red blood cells also. We'll talk about that later on. Right now, fetal stage mein, it is done by whom? Spleen, liver, red bone marrow, and the thymus. Where is the thymus, Muchilo? In your chest region. Okay. You know, you got the heart. From the heart arises aorta. So, udari, aage, ventricle. Okay, near the heart, you can see. There is an organ which is called as thymus. Here. Then, once you become adults, the main site of red blood cell formation is your RBM. Red bone marrow of long bones.
Yeah, the long bone. Yes. It has got a shaft. What is shaft called? Diaphysis. The end is called as the epiphysis. Or it is also called as the spongy bone. So which part is responsible for it, Bachalo? The spongy part of the red bone marrow. Okay? Even your pectoral and pelvic bones. Pectoral and pelvic bones. This is your pelvic bone. Hip bone is called pelvic girdle we call it. Huh? And this is the pectoral. So pectoral and pelvic are responsible for erythropoiesis in the adults. Okay. So from this, what we have come to know that your skeleton, your haddiyan, your bones not only give surface for the attachment of muscles, it not only gives you a framework. आपके बॉडी को सिर्फ ढांचा नहीं देता, बट बल्कि आपको रक्त बनाने में भी हेल्प करता है. हार्ट का तो काम है ब्लड को क्या करना, पंप करना. लेकिन अंदर का जो आरबीसी को बनाने का काम है, ब्लड को बनाने का काम है, वो कौन करते हैं? ये सब ऑर्गन्स का. समझा मेरी बात? सो कैन आई से हेल्दी बोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट as you grow old also, because they are not only for walking and locomotion, they are also the sites of red blood cell formation. Got the importance, Bachalo? Okay. So you saw how the sites of erythropoiesis changed as your life cycle progressed from embryo to fetus to adults. Shall we continue? Now, when there be a increase in erythropoiesis, increase समझ में आता ना? बढ़ना. क्या बढ़ गया? Erythropoiesis has increased. Then it results in a condition called polycythemia. Increase in the production of RBCs is called polycythemia. Okay? Natural polycythemia occurs when you go at higher altitudes. It occurs naturally when you go at higher altitudes. Can anybody explain me the logic why at higher altitudes polycythemia occurs? सबसे पहले polycythemia याद है ना सबको? What is polycythemia? Red blood cell का production बढ़ जाना. और मैंने बोला जब आप higher altitudes में जाते हो, like for example you are going for mountain climbing, you have gone to say Manali, Shimla, Rohtang Pass, you are going up the Himalayas. Okay, so you are going at higher altitudes, your RBC production will increase. Have you seen Kashmiri people? Yeah. Are they only fair or red, rosy and fair? Red, rosy. You see the lips and their cheeks? कैसे लाल लाल होते हैं ना एकदम सेब के जैसे. इसलिए तो कश्मीर की कली बोलते हैं ना, या कश्मीर का कला जो भी बोलेंगे वो. Because they're very fair and red rosy people. Because naturally the RBC production is high. But you have not still told me why. Because बोल रहा सर. Due to less amount of oxygen in higher altitudes, so they will need more RBCs per oxygen transpiration. Okay, correct. Okay, as you go at higher altitudes, the oxygen keeps on decreasing. So उसको compensate करने के लिए बॉडी बोलता है कि अभी मैं आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा देगा, ताकि हर एक मॉलिक्यूल को हम क्या करें, वहां तक पहुंचा सकें. और भी कुछ चेंजेस होते हैं हीमोग्लोबिन में, लेकिन इतना यहाँ पे समझ में आ गया आप लोग को. अच्छा, बट अगर विदाउट कोई रीजन पॉलीसाइथीमिया होता है, like sometimes the athletes na, they are known to take drugs which increase RBC production. Why do they do that? To increase their stamina. Like there was an athlete, a very famous one, I don't know whether you heard of him, Lance Armstrong, Tour de France winner 7 times, an American hero, a cancer survivor in US. Nice actually, na? Have you heard of Tour de France? No? सायकल चालवायची असते. सांगलीमध्ये नाही, पूर्ण ते अँडीज माउंटन्स वगैरे आहेत ना, त्या माउंटन रेंजेस काय, आल्प्स अँडीज काय, ते मला पण नाही माहिती. तिकडे फ्रान्समध्ये, पूर्ण फ्रान्समध्ये, the legs are this much huge. Okay, then you require a lot of endurance for that, na. So this guy was a cancer survivor.
तो अमेरिकन हीरो था, 7 टाइम्स ऑलमोस्ट जीता था वो टूर डी फ्रांस, लेकिन वो डोपिंग करता था, चीटिंग करता था। क्या चीटिंग करता था बच्चों? वो अपने अंदर एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्ट करता था, जिससे क्या होगा? आरबीसी प्रोडक्शन, तो उसके मसल्स को ऑक्सीजन, तो उसके मसल्स थकेंगे कि नहीं थकेंगे जल्दी? तो उसका स्टैमिना, हाँ यही करना। नहीं समझ मेरी बात? किसने सिखाया वो उसको? ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डॉक्टर। पकड़ा किसको? एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, दूसरा डॉक्टर। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। देखिए ये उसके बॉडी के लिए अच्छा है कि बुरा बच्चों? जब आरबीसी प्रोडक्शन ऐसा बढ़ जाएगा तो डोंट यू थिंक योर ब्लड विल बिकम मोर विस्कस? जास्त घट्ट गाढा होणार ना ब्लड, मग हार्टच्या वॉल्सला पंप करायला पण प्रेशर जास्त जनरेट करायला लागेल, म्हणून आपल्या हार्टचे वॉल्स काय होणार? थकून जाणार, हार्ट फेलियर पण होऊ शकतं, कारण तुमचं ब्लड जास्त काय झालं? घट्ट. म्हणून बघा ज्या लोकांना हार्टचा प्रॉब्लेम असतो, डॉक्टर त्यांना ब्लड पातळ करायला दवा देतात. समजलं? जेवढं ब्लड पातळ असणार तेवढं त्याचा प्रवाह सोपा होईल. ब्लडचा प्रवाह, the flow, the flow of blood will be smoother. I hope you got my point. Similarly, bachcho, there can be a simultaneous decrease also, which is called as erythrocytopenia. क्या होता है उसको? एरिथ्रोसाइटोपेनिया, that is anemia बच्चों. एनीमिया तो सुना होगा ना लोगों ने सुना. सही है guys? Shall I continue? Decrease is called erythrocytopenia. So erythropoiesis is the formation of RBCs and the sites है और ये conditions. Okay. You know what is one of the speciality of a mammalian RBC? We are mammals, no, bachcho? How is our RBC? A mammalian RBC is biconvex and is enucleated, except into animals. Camel and camel जैसे दिखने वाला लेमा बोलते हैं. So how is our RBC बच्चों? It is biconvex. अरे it will be biconvex. Biconvex and it is enucleated. बरोबर है? But it was not always like that. In maturity, it is like that. You know, you have got red bone marrow. Your red bone marrow has got pluripotent stem cells. पता था ना मैंने कभी इसके बारे में? What are pluripotent stem cells? Can they form entire organ? Can they form an entire organism or a particular tissue or a cell type? So pluripotent is संपूर्ण क्षमता और limited क्षमता. So red bone marrow में कौन से cells हैं? They will form cells called myeloid line. This myeloid line of cells, they will result in the formation of hematoblast cells. Hematoblast cells will form cells which are called reticulocyte cells, जिसमें से न्यूक्लियस को क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा, ताकि मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में क्या होगा? न्यूक्लियस नहीं होगा. समझे मेरी बात? रेड बोन मैरो के पास क्या है बच्चों? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स. ये प्लूरिपोटेंट सेल्स क्या बनाते हैं? एक टाइप ऑफ सेल टाइप जिसको बोलते हैं माइलॉइड, और वो माइलॉइड में से क्या बोलते हैं? यंग आरबीसी. ये यंग आरबीसी में एक स्टेज क्या होती है? रेटिकुलोसाइट्स. उसमें से क्या निकाल दिया जाता है? न्यूक्लियस, और अल्टीमेटली क्या बनता है? मैच्योर आरबीसीज. जैसे एक आइडिया दिया मैंने, इसको कृपया करके आपको याद नहीं करना है. I have also known, but you should know basic things.
ठीक है बच्चों लोग, आया ना? So sometimes why do I need to tell you then? At least I have to develop your right concepts also, no? Bachcho? What my point? तर का सांगितलं मग याने कसं आम्हाला लक्षात नाही ठेवलं. अरे मूर्खांनो, तिकडे जाल तुम्ही फक्त पोपट सारखं पाठ करून, ती केएम ची म्हातारी हाकलून लावेल तुम्हाला. समजलं की नाही? हा, बेसिक आयडिया आली पाहिजे तुम्हाला की रेड बोन मॅरो आहे, त्याच्यामध्ये प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल आहे. सरांनी आज काय लिहिलं? मायलॉइड लाईन. म्हणजे अजून पण कोणतरी लाईन असेल असं विचार करायचं. ती लाईन व्हाईट ब्लड सेल फॉर्म करते, ही लाईन आरबीसी फॉर्म करतो. कोणाला ब्लड कॅन्सर असेल तर आपण बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट केला तर त्याचं ब्लड कॅन्सर ठीक होऊ शकतं, कारण काय आहे तिकडे प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स आहेत. नाही समजलं? बरोबर. So how are the mammalian red blood cells? Biconcave and enucleated, except in where it is biconvex and nucleated and oval. So your homework is next lecture tomorrow. Okay? अच्छा tomorrow बोल के मैं अगली बार आ भी जाता वापस. Next lecture आता जाता ना, बोला कल करेंगे ना आरबीसी को, लेकिन आज ही करे. देखो मेरे नसीब में था आज आरबीसी पढ़ना. तुम मुझे कल बताओगे कि कैमल के पास रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस क्यों? तुम बताएंगे मेरे को कल. ठीक है? हमारे पास होता है कि नहीं होता है? नहीं होता. आरबीसी मैच्योर आरबीसी में नहीं होता, कैमल में होता है. आपको रीजन बताना है. ओके? सो अगर स्टेटमेंट ऐसा है, ह्यूमन आरबीसीज, ओके, नंदिनी विल टेल अस, human RBCs are always enucleated. True or false? True. I'll say false. Mature human RBCs are always enucleated. Shall we get? Mature human RBCs are always enucleated. RBCs once upon a time had a nucleus when they were young. Then the nucleus was removed at one of the stages that I had mentioned. ये सब क्यों बताया था कि ये सब छोटी छोटी बातें आप याद रखिए. Got it everybody? Now, the mature RBC, let us see what are its characteristic features. For mature RBC. Number 1. In a surface view समझा? जैसे कॉइन है, कॉइन है तुम्हारे पास, किसी पास कॉइन है? वापस दूंगा, टेंशन मत लो. ये दुबे रहेगा तो भी नहीं रहेगा. देखो, आई एम लुकिंग एट दिस कॉइन फ्रॉम द टॉप. कहां से देख रहा हूं मैं? टॉप. ये आरबीसी, आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम द टॉप. सरफेस व्यू को. इन द सरफेस व्यू it will appear circular. But in the side view, this is the side view, it will appear what? Biconcave. Why does it appear? Why it has to be biconcave? Does it get any advantage of being biconcave? Surface area will increase for the exchange of gases. समझा क्या एडवांटेज मिला? Being biconcave, it will provide more surface area for what kids? Gaseous exchange. Second, तो आवाज काट दे. It is what? Enucleated. So what is enucleated? What is enucleated? ओंकार. अरे बा ऐसी बैठे नहीं तो तुम लोग यार. मतलब काय? घेना देनाच नाही. हाँ तो न्यूक्लियस नहीं होता, इधर उधर से सुन के बोलेगा. What do you mean by enucleated? न्यूक्लियस नहीं होता. Any possible advantage of nucleus नहीं होता बच्चों? Any advantage of it being enucleated? Yes. It gets packed. It gives more space for a protein which is called as hemoglobin. क्या नाम है प्रोटीन का? Hemoglobin. Hemoglobin
HB बोलते हैं ना उसको. It is made up of two parts. The protein part is called globin. So what's the protein part called? Globin. And the non-protein part is called as heme. Hemo नहीं heme. Okay? समझा कि नहीं? थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ मैं. Globin is a protein which is made up of 4 polypeptide chains. You know what is a polypeptide chain? Many amino acids will come together to form a polypeptide chain. In this manner, hemoglobin is made up of 4 polypeptide chains called 2 alpha chains and 2 beta chains. Quaternary structure of a protein. 1 alpha, 2 alpha, 1 beta, 2 beta. Hemoglobin, quaternary structure. Okay, so the globin is a protein which is made up of 4 polypeptide chains, out of which 2 alpha and 2 beta. Heme is a iron porphyrin system. Matlab you remember that it shows the presence of iron in the form of Fe2+. Have you got it, everybody? Ayana. And one hemoglobin has got 4 ions. So it can carry how much bachlo? 4 oxygens. एक हीमोग्लोबिन कितना? एक हीमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स है? 4. Okay, and one hemoglobin can carry how many oxygen? 4. You remember that? Yes or no? Yes. Okay. ऐसे आपके एक आरबीसी के पास 260 मिलियन हीमोग्लोबिन. नहीं, अचंभित नहीं हुए ना तुम लोग? एक हीमोग्लोबिन के पास कितने हैं? 260. एक आरबीसी के पास ऑलमोस्ट कितने हैं? 260 मिलियन. क्या? हीमोग्लोबिन. तो अब इमेजिन करो कितना क्या कैरी करता होगा? ऑक्सीजन. ऐसे आपके बॉडी के अंदर कितने मिलियन आरबीसीज है? 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी. आप जरा नंबर्स समझे कि नहीं? एक हीमोग्लोबिन में एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करता है? 4. एक रेड ब्लड सेल में कितने हीमोग्लोबिन है? 260. ऐसे आपके बॉडी में कितने आरबीसीज है? तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ hemoglobin that you have and the amount of oxygen that they can carry. सही समझा आपने? Got it? तुम लोग बुला रहे कोई? Did you get the dynamics, everybody? Okay. So what is the heme part? The heme part is called as iron porphyrin system. When we teach you photosynthesis, at that time we'll talk about a molecule called chlorophyll. Have you heard of chlorophyll? Yes. Hemoglobin में हीम होता है ना, उसमें आयन होता है. क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है. क्या होता है? मैग्नीशियम. So it's a magnesium containing porphyrin system. इसे घर पे बोलता है पाले भाजी खाने का अच्छा रहता है तुम्हारा रक्त बनाने के लिए. तुम पाले भाजी खाएगा तो क्या होगा? पोरफायरिन सिस्टम मिलेगा. उसका मैग्नीशियम निकाल के अगर आप आयरन डाल दोगे तो क्या बनेगा? समझे मेरी बात? Should I continue? Now further, bachcho. So if I ask you, why is the red blood cell enucleated? What's the answer you give me? So that it can get packed with the hemoglobin. And then I have explained to you that one RBC
has got almost 260 million. तो इतना रखने के लिए जगह तो होनी चाहिए ना बच्चों लोग. तो न्यूक्लियस को रखेंगे कि हटा देंगे? हटा देंगे. And one hemoglobin is made up of globin and heme. Globin is made up of 4 polypeptide chains, 2 alpha and 2 beta. The heme is a iron porphyrin system, shows the presence of Fe2+. Some other special adaptations are, so, absence of mitochondria. This is mitochondria? नहीं है, absent. क्या advantage है mitochondria नहीं है? It will not use the own oxygen which it is carrying. Will you make a drunkard owner of a bar shop? जो दिन रात पीता है उसको आप बार शॉप का ओनर बनाएंगे क्या? वो क्या करेगा? खुद ही दिन रात पीते बैठेगा. बराबर है ना? तो अगर आपने रेड ब्लड सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ऑक्सीजन यूज कर लेगा. So that is why you will see that there is absence of, even there is absence of organelles like endoplasmic reticulum and Golgi bodies. And the reason is space. दूसरा, the metabolic activity of RBCs is very low. वो दूसरे इधर उधर के दूसरे काम नहीं करता. So as a result of which it has to depend upon which type of respiration? Anaerobic respiration. And it performs only what? Glycolysis. You must have studied in school now, bachcho? Glycolysis, acetylation, Krebs cycle, electron transport chain. Glycolysis is the first step of respiration, which gives only 2 molecules of ATP as profit. And that is enough for an RBC. क्योंकि वो बाकी दूसरे काम नहीं करता, क्योंकि उसके बाद वैसे भी ER, GB वगैरह कुछ नहीं है, तो वैसे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है? कम होती है. आया बात समझ में सबको? Yes or no? Okay. And the movement of RBCs is by the process of diffusion. Okay? Your heart will create a pressure which is called blood pressure, and because of the blood pressure the RBCs will keep on flowing by the process of diffusion. मालूम है आप लोगों ने देखा कि नहीं, वो बचपन में वाटर का एक गेम आता था जिसमें एक ब्लैक कलर का एक बटन था, अंदर वाटर के अंदर रिंग्स हुआ करती थी. दैट ब्लैक कलर का बटन इज अ हार्ट. हु इज इट? Heart. It will create that pressure. And who are the rings? RBCs. Can the RBCs move on their own? No. If you stop pumping that button, what will happen? All of them will settle down. समझ मेरी बात? वो सेटलिंग डाउन को भी मेडिसिन में नाम है, रोलेक्स बोलते हैं, जानते हो? ठीक है? ऐसा. बहुत डिटेल है आरबीसी. इतना आपके ठीक है? कुछ लोग? कोई क्वेश्चन है आपकी लाइफ में? देखो यहाँ पे. हाँ, कुछ नहीं, बस सुन रहे. हाँ कैसे? यंग आरबीसी फिर ऑक्सीजन ट्रांसफर कर पाता है, वो पार्टेक करता है? नहीं, वो अभी तक मैदान में उतरा नहीं. वो जब मैच्योर आरबीसी बनता है तब वो बोन मैरो को छोड़ के मैदान में था. समझा? वो अभी उसकी एकेडमी में. समझा? अभी तू जब नीट पढ़ाई कर रहा है और जब तू फर्स्ट ईयर मेडिसिन में जाएगा तो हार्ट का ऑपरेशन करेगा तू? नहीं. कब करेगा? फर्स्ट ईयर एमएस बनने के बाद. समझा ना? तो आरबीसी जब पूरा मैच्योर होगा तब वो बोन मैरो को छोड़ के बाहर आएगा ब्लड के अंदर. बोलेगा अभी मैं लेके जाएगा ऑक्सीजन का हिस्सा. समझा मेरी बात? जब वो यंग है, जब वो मैच्योर है, अभी तक कहां पे डेवलप हो रहा है उसका? रेड बोन. ओके. So what is the main job of the red blood cell and its hemoglobin? To carry oxygen and carbon dioxide. Did you get it, all of you? Yes or no? Okay. What is the lifespan? I think you must have heard it in school. Is about 120 days. Okay. Why does it have a short lifespan? Any idea? उसका लाइफ स्पैन का कम क्यों हो जाता है बच्चों लोग? शॉर्ट क्यों हो जाता है आरबीसी का? कुछ सोच सकते हो? देखो,
जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी उसका सेल मेम्ब्रेन जो है ना फ्रजाइल होते जाएगा। फ्रजाइल मतलब वीक, कमजोर होते जाएगा। बाकी सेल्स के साथ भी ऐसे ही होता है, लेकिन क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडीज होता है, वो लोग बार बार उसको क्या करते रहते हैं, रिपेयर करते हैं। ये सेल के पास है ऐसा? उसके पास न्यूक्लियस है सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स के साथ? नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा वो? चलो क्या हो जाएगा वो? After 120 days, its cell membrane will become very fragile and it gets destroyed in your spleen and your liver. And the spleen is called as the graveyard of RBCs. Qabristan of RBCs. Why? Because the cap. सो हो गया ना, आधे से ज्यादा उनको ध्यान ही नहीं गए, कहाँ घूम रहे पता नहीं अभी। ये कौन है? नहीं, ये स्प्लीन के अंदर की कैपिलरी। सो हाउ इज द कैपिलरी इन द स्प्लीन? ब्रॉड और वेरी नैरो? इट्स वेरी नैरो। सो व्हेन द रेड ब्लड सेल्स हैव टू पास थ्रू इट, दे हैव टू स्क्वीज देमसेल्फ। सो हाउ आर द रेड ब्लड सेल्स, हाउ आर द कैपिलरीज इन द स्प्लीन? इन सम ऑफ द रीजन्स दे आर वेरी नैरो। इतने पतले होते हैं कि रेड ब्लड सेल को अपने आप को वहां से स्क्वीज करके जाना पड़ता है। तो जो रेड ब्लड सेल की एज 120 डेज और उसके ऊपर हो गई है, उसकी सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई है? फ्रजाइल। तो वो अपने आप को जब स्क्वीज करके जाने की कोशिश करेंगे तो आरबीसी क्या हो जाएगा? और जो यंग होगा वो निकल लेगा। अब आप बुढ़े आदमी से जिम्नास्टिक्स करवाओगे तो उसकी हड्डी तो टूटेगी ना, चलो ये नहीं टूटेगा। समझा मेरा बात? So who is the graveyard of RBCs, Ucho? The spleen is considered as a graveyard of RBCs. Any problem here, Ucho? Did you all understand this? Okay. And ठीक है, copy of clear, then we'll continue. हाँ, so we can do. One of the red blood cell. And do you know which place it is produced in? Red, gold, marrow. है ना? Who is this? Gold. तो बच्चों लोग एक आरबीसी बनाने के लिए क्या क्या लगता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के लिए क्या लगेगा बच्चों लोग अपने पास? ग्लोबिन। यू रिक्वायर आयरन, यू रिक्वायर फॉलिक एसिड, विटामिन B12, यू रिक्वायर एरिथ्रोपोइटिन। ये सारी चीजें बनेगी ना, यूज होगी। तो क्या बनेगा बच्चों? एक आरबीसी। और ये आरबीसी की लाइफ कितनी होगी बच्चों लोग? About 120 days. After 120 days, it will be destroyed in the spleen and the liver. तो जब फेंक देते फिर उसके अंदर का सब। बड़ा रिस्क है ना बच्चों। एक आरबीसी के अंदर कितना है? 260 मिलियन एचबी। मतलब कितना सारा प्रोटीन और कितनी सारी आयरन है। Your body is typical middle class. It will not like to throw all this. अपने घर पे जब कोई भी चीज जोमेटो वाला पार्सल भी लेके आता है वो डब्बा में, तो वो डब्बा धो के पूर्ण यूज करता है उसको। नहीं मेरा बात समझा? तो इतना सारा हीमोग्लोबिन अपना बॉडी वेस्ट करने वाला है, पागल है क्या? नहीं, देखो क्या मस्त बॉडी दिमाग लगाता है। हाँ, वो क्या करता है मालूम बच्चों? It breaks the hemoglobin into two parts. Which part? One is globin. So liver में क्या हो गया बच्चों? There is dead RBC. और वो डेड आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ ऐसा किया जा रहा है। आप नहीं समझे मेरा बात? हाँ या ना? क्या क्या समझे बताओ? कि the red blood cell is dead
and after the red blood cell is dead, उसके अंदर की हीमोग्लोबिन को रखेंगे कि फेंक देंगे? रखेंगे। देखो उसके साथ क्या करेंगे। The hemoglobin will be broken down into two parts. One is called what बच्चों? Globin. This globin will be further broken down into what? Amino acids, which will be used for the formation of new globin. वाह, सही ना? तो ये तो कैसे होशियार? बचा क्या बच्चों? हीम। हीम को भी क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। किसमें बच्चों? Iron, and it will form pigments called biliverdin and bilirubin will be formed. These are called bile pigments. क्या तो सोचो? Bile pigments. Because the liver will put into what बच्चों? Bile juice. From there they'll be thrown out in the form of stercobilinogen in your feces and urobilinogen in your urine. Okay? हीम उसको ब्रेक किया, किसमें? आयरन निकाल दिया। समझा मेरे बात? बचा क्या? वो पोर्फायरिन वाला पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइल पिगमेंट्स। ये बड़ा सीक्वेंस है, मैंने शॉर्ट करके दिया आपको। तो उसमें से क्या बनता है बच्चों लोग? बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। इसको किस में डाल दिया जाता है? ये बाइल जूसेस के थ्रू फिर बाद में क्या होता है? इसका आगे भी होते हैं प्रोसेस, शॉर्ट किया मैंने उसको। स्टर्कोबिलिनोजन बनता है जो आपके फीसेस के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है। that is what gives brown color to the feces. And urobilinogen in the urine, that will give yellowish color to the urine. So during hepatitis, whose symptom is jaundice, one type of bilirubin ka level will increase, as a result of which your nails and your urine and your eyes will become more dark yellow in color, because वो टाइम पे वो जो हेपेटोसाइट, ये क्या बोला मैंने, कौन सा डिसीज? हेपेटाइटिस। वो टाइम पे जो अटैक हुआ है आपके लिवर के सेल्स पे हुआ है, और वो टाइम पे एक टाइप का कौन? बिलिरुबिन आपके ब्लड में क्या होता है? बढ़ जाता है, और उसके सिम्टम को हम बोलते हैं जॉइंडिस। हेपेटाइटिस के सिम्टम को क्या होता है? या पीलिया, जिसको बोलते हैं हिंदी में पीलिया। पीला पड़ना। बचा कौन अभी बच्चों? Iron. Iron is stored in your liver in the form of a chemical called ferritin. क्या बोलते उसको? Ferritin. And जब जरूरत पड़ती है, then iron is given to whom? Red bone marrow for the production of new RBCs. समझा? Iron. So what is the color of your liver बच्चों? Reddish brown. And what gives it the red color? Iron. So that is what I said. Liver is a very rich source of iron. Got it? मैंने just कुछ टाइम पहले बताया था ना कि which part of your body is a rich source of iron? Liver. Why? Because it stores iron in the form of ferritin. Okay? We got how the body deals with hemoglobin. When the red blood cell is dead after 120 days, one RBC has got how much? 260 million. अभी तक फेंक तो नहीं सकते ना, तो उसको क्या करेंगे बच्चों? हीमोग्लोबिन को ब्रेक करेंगे। कितने पार्ट्स में? हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन को रीयूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, एंड हीम विल बी ब्रोकन डाउन इनटू आयरन, व्हिच विल बी स्टोर्ड इन द लिवर एंड गिवन टू द red bone marrow when required, and this heme ka the pigment part will be thrown out in your feces and in your urine. ठीक है? Clear everybody? Did you understand this? Any questions here? पक्का? और क्षमता है? Give me yes or no. Yes. Huh? Yes.
पक्का? Huh? Then only I'll proceed further, because the next thing I'm going to talk about is a little important concept, and you need to understand it. Blood group. Huh? आहे तेवढं वजन घेऊ शकता का? Aditya, give me a frank opinion. We can do it tomorrow also. Tomorrow? We'll do it tomorrow. We'll do quick revision now. Switch it off. Okay.